Now potassium is taken as a potassium ion. Potassium ion. It is more abundant in meristematic tissue like buds, roots, tips, and young leaves. It determines the anion-cation balance in the cell. It controls the opening and closing of stomata. It maintains turgidity, osmotic balance of the cell. It activates a number of enzymes. It also involved in protein synthesis. Now magnesium function. It is absorbed as magnesium ion by plant. It is a constituent of chlorophyll, forms the central atom of porphyrin rings. It maintains the ribosome structure for protein synthesis. It activates the enzyme of respiration and photosynthesis. It also involved in the synthesis of DNA and RNA. Now कैल्शियम का यूज़ देखें. कैल्शियम इज़ ऑब्टेन्ड एज ए कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल. It is necessary for selective permeability of cell membrane. It occurs as a calcium pactate in the middle lamella of cell wall. Hence, it is necessary for cell enlargement. It is used in the formation of mitotic spindle during cell division. Hence, it is required in the meristematic and differentiating tissue, root apex and shoot apex. It activates the certain enzyme in the metabolism. Now, role of micro elements, example is iron is absorbed mainly in the form of ferric ions. Number 1, it is an important constituent of cytochrome and ferridoxin involved in the electron transport. It activates catalase. Third, it is involved in the synthesis of chlorophyll. आयरन के बाद देखें कॉपर. इट इज़ absorbed by cupric ions. It is associated with the certain enzyme involved in the redox reactions. It is essential for overall metabolism. Now boron, it is absorbed as BO3 or B4O7. It is required for carbohydrate translocation as a sugar borate. It is necessary for uptake and utilization of calcium ions. It is needed for pollen germination. It is involved in the cell elongation and cell differentiation. ये हो गया बोरोन. इसके बाद हम देखते हैं जिंक. इट इज़ ऑब्टेन्ड. जिंक में देखें इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एज एन जिंक आयन. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन and it activates many enzymes, especially carboxylase. ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो कि ग्रोथ करता है उसके लिए जिंक की ज़रूरत होती है. मैग्नीशियम, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एज ए एमएन आयन. मैग्नीज आयन्स. It is best defined function by splitting of water and release oxygen in photosynthesis. It activates many enzymes involved in the photosynthesis, nitrogen metabolism and respiration. Now molybdenum plants obtain molybdenum as molybdate ions. It is a cofactor for enzyme nitrate reductase. It is also necessary for nitrogenase. Chlorine, it is taken in the form of chloride ions along with sodium and potassium ion. It determines the anion cation balance in the cell and determines the solute concentration. It is necessary for photolysis of water in photosynthesis. It may be required for cell division in leaves and roots. Chlorine हो गया. Deficiency symptoms. An element is said to be deficient if it is present below in a critical concentration. तो अभी हम चैप्टर में देख रहे हैं कि सारे जो न्यूट्रिएंट हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट उनके कुछ फंक्शन हमने देखे. Now since each element has one or more specific structural and functional role in plant, in the absence of any particular element, the plant show certain morphological observable changes. They are
indicative of certain elements deficiency and are called deficiency symptoms. The deficiency symptoms tends to appear first in the young tissue in the case of elements that are relatively immovable and are not transported out of the mature organ. Sulfur and calcium, which form structural component. The deficiency symptoms tend to appear first in older tissue. If the elements are actively mobile, they are withdrawn from the sensing organs and transported to young tissue. Example: nitrogen, potassium and magnesium. Toxicity of micronutrient. An element or mineral ion is considered toxic if it reduces the dry weight of plant tissue by about 10%. यानी अगर सूखी मिट्टी में कोई अमाउंट 10% से कम हो जाता है तो वो वहाँ पर मिनरल आयन टॉक्सिसिटी यानी प्लांट के लिए अच्छे इफेक्ट नहीं लाता. द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स are difficult to identify. Toxicity level of any elements vary with the plant species. Excess of an element may inhibit the uptake of another element. Manganese toxicity produce brown spots surrounded by chloritic veins. तो जो मैग्नीज़ की जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें पत्तियों की जो वेन्स होती हैं उसमें ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं. तो यहाँ पर माना जाता है कि मैग्नीज़ की टॉक्सिसिटी हो गई है. मैग्नीज़ कंपोनेंट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग द एंजाइम. मैग्नीज़ ऑल्सो इनिबिट्स द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स. तो मैग्नीज़ की टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन जो है वो शूट अपेक्स की तरफ होना बंद हो जाता है, जिससे पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी होकर कर्वेचर हो जाता है. एज ए रिजल्ट एक्सेस ऑफ मैग्नीज़ में इंड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ये भी देखा गया है कि अगर मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी बनी रहती है तो उसका इफ़ेक्ट आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी होता है. Mechanism of absorption of element. The process of absorption occur in two distinct phases. In the first phase, there is a rapid uptake ions into the free space or outer space of cell, the apoplast. It is passive process and takes place through ion channels. In the second phase, the ions are taken slowly into the inner phase of the symplast of the cells. This is the active process and require the expenditure of metabolic energy. Second phase में metabolic energy खर्च होती है. अब हम देखते हैं the movement of ion is called flux. The ion का movement flux कहलाता है. The inward movement into the cell, अगर movement cell के अंदर होता है that is called influx and outward movement is called efflux. अगर वो मूवमेंट सेल के बाहर होता है तो उसे इफ्लक्स कहते हैं. ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट. मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एसेंट ऑफ सैप विच इज़ पुल्ड बाई ट्रांसपिरेशन पुल. एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप इन डिफरेंट वेज हैज़ शोन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन इट. Metabolism of nitrogen. Nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. It exists in two nitrogen atom held together by strong triple covalent bond. जैसे हम देख रहे हैं N और N के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं. नाइट्रोजन साइकिल involves the following step. Number 1, nitrogen fixation. Number 2, ammonification. Number 3, nitrification and denitrification. Nitrogen fixation, the process of conversion of nitrogen into ammonia and other nitrogen compound is known as nitrogen fixation. In nature, lightning and ultraviolet radiation provide energy to convert the nitrogen into the nitrogen oxide like N2O, NO and NO2.
Atmosphere also gets some amount of nitrogen oxide from forest fire, automobile exhaust, and industrial combustion and power generating stations. Now, ammonification, the process by which organic nitrogenous compounds are decomposed to produce ammonia is known as ammonification. Some ammonia volatilizes and re-enters in the atmosphere. Most of the ammonia is converted into nitrites and nitrates. Now, nitrification is the process converting ammonia first into nitrite and then into nitrate. That is called nitrification. तो हम देखते हैं यहाँ पर NH3 प्लस O2 इज इक्वल टू NO2 प्लस 2H प्लस 2H2O, ऐसी NO2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO3. तो अभी हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देख रहे हैं. तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप हैं वो अभी हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स. ये नाइट्रोजन साइकिल है, एग्ज़ाम में बहुत आती है.